Assalamu alaikum everyone. Thank you very much for joining us on this episode, new episode of Startup Talks. This episode is very special because I'm joined today by somebody really special. I've been dying to hold a talk with him. One reason for that is because, fortunately, I've come across somebody who's actually my age, in the same age bracket as me, right? And he's doing some amazing stuff for quite a bit of time and hiding behind the curtain and just carrying on with his good deeds that he's doing in the startup ecosystem. And I'm fortunate enough to be joined today by Adnan Faisal from Okay. the founder of ScaleX. Assalamu alaikum, Adnan. How are you doing, sir? Walaikum Assalam, all well, and thank you for your kind words. सर थैंक यू वेरी मच आई होप आई हैव डन जस्टिस मैं जस्टिस कर नहीं सकता आपने बहुत सारी चीज़ें की हैं बड़ा पहाड़ खड़ा है आपके पीछे तो इट्स डिफ़िकल्ट टू Um, डिस्क्राइब ऑल ऑफ दैट बट आई लीव दैट टू यू so Adnan, let's begin with you. How did you end up in the ecosystem? Where did the journey start from? I know you were talking about IBA. Let's start from back then. right, sure. So I did my BBA MBA in finance from IBA Karachi back in 97, 98. Mm-hmm. And then I worked with corporates, Shell and ABN AMRO Equities. Mm-hmm. And when the dot-com bubble was at its peak, the entrepreneurship startup bug caught me as well. Okay. So I, along with a friend of mine who was working with IBM and was Fastian, we joined together and we started a software services firm. Also, there was no concept of incubators, accelerators. So, anyways, we got a number of projects, but then the bubble burst. Uske baad next year, September 11 happened. So, all export possibilities also dried up. The bubble had, sort of shrunk the supply side or demand side of the projects also. But we kept at it, and I said, I've changed two corporate jobs, so I should, do the full cycle. And I'm very glad and fortunate that I did that. So 2 years later, the Pakistani banking sector got privatized, and so one of our projects became a product. Mm-hmm. It was a regulatory compliance product, and we did a lot of work with pharma. Uh, so going forward in 2006, I sold my stake. It was like a mini exit for me, and I joined the fund management industry as a head of research and investment research and fund manager for a fund. I worked with them for 3 years, Mm-hmm. and in 2008, at the end of 2008, I joined a US-based hedge fund Mm-hmm. as a senior analyst for their technology sector investments. Okay. They had a research center in Karachi, so I, joined from there. Mm-hmm. It was a great experience of 6 years, where in the end I was portfolio manager for the technology investments with them. And interestingly, like I thought I knew technology, but I learned that I only understood software. I learned semiconductors and Chinese online gaming and a lot of stuff, the whole value chain over there. So in 2014, our family wanted to come back close. I'm from KP. My parents are in Peshawar, so we wanted to come closer to home, and we moved to Islamabad. At that time, the Nust University was looking for someone to head their tech incubator. Mm-hmm. And so I parked myself. I thought I'll park myself for a while because it was like I was overqualified maybe for that. But when I joined in, and after the first couple of quarters, I realized that my whole background kind of converges over here, Mm-hmm. because I had done bottom up startup building myself, Yeah. and I had done top down technology investments also, but in public markets. So this was sort of enabling other startups. So I worked with a couple of startups, and it worked well. So then I decided that I will continue sort of with that. So those
that parking, sort of kept me there for a good 6 7 years. And a number of great startup stories came out of the center. But the hallmark of it was when so we won a grant program from the U.S. State Department, and that was a Silicon Valley immersion program for startups. So we took 12 startups in two cohorts from Pakistan, and it was like a 3 month immersion for each cohort in the valley, whereby we connected them with advisors, with mentors. We also had a partner in the valley who kind of not only help in logistics but also in access to numerous opportunities. Open was a good friendly partner with us, and the program went very well. So 50% of the startups, 6 out of 12, were able to raise funding. Three of them from institutional VCs, and since they were all at idea stage, so it was like quite an impressive feat for Pakistani founders to go from Pakistan in an idea stage and also be funded by VCs. That the success of that program was really celebrated at the State Department level, and they have sort of committed now to sort of make it an every year thing. However, some of my colleagues and friends, in Valley, they wanted me to do this thing on a private basis, and they expressed their interest to fund it also. So that's how my transition from that university related work to my own accelerator sort of happened, which is ScaleX, and it is fashioned on those very same principles, which is we believe that founder grooming and exposure is very important, because ultimately the money that a founder is getting is sort of to multiply it through their skill sets, strategy skill sets, business skill sets, and of course technology management. So we thought that founder development is a very important piece of the work, and secondly, access to markets, global markets. So that is why we say that ScaleX is basically a platform to introduce emerging markets, specifically Pakistani founders, to the global marketplace of founders. And so we are doing ScaleX for the past 20 months now, 24 months almost. And we have had 2 cohorts. So we work in a very selective manner. In each cohort, there's only 4 startups. You can say it's a startup studios type coaching, but on accelerator terms. And we're just starting. So we're looking forward to some breakthrough stories coming from our program, and inshallah, with that, then we will also scale up. Inshallah, sir. First of all, when you decided to park yourself, right, when you're talking about NAS, you've been actually very lucky in that respect, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब पाकिस्तान मूव होते हैं या एक सर्टेन एज के बाद जो है वो ओवरनाइट ओवर क्वालिफाइड हो जाते हैं लोग, तो उनको जो है वो एडजस्ट करने में मुश्किल होती है. तो आई हैड द सेम इशू एक्चुअली व्हेन आई मूव बैक टू पाकिस्तान. तो हर जगह के लिए जो है वो ओवरनाइट जो है मैं ओवर क्वालिफाई हो गया था और हैड टू रियली स्टार्ट स्ट्रगल इन द बिगनिंग बैक इन 2008. बट अल्लाह का शुक्र, जैसा हर कंट्री का एक अलग कल्चर होता है, हर जगह की एक काम करने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, तो धक्के खा करके बहुत सारी चीज़ें जो है अल्लाह का शुक्र है सीखनी. तो आज जो है उसी का नतीजा है कि हम आपस में बैठ कर के यहाँ बात कर रहे हैं. तो अदनान, लेट्स टॉक अबाउट ScaleX. माशाल्लाह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एक्सपीरियंस जो है it has a lot of variety into it. You've been into banking, into corporate sector, into pharma, into oil and gas and all of those things. So it's a pretty wide exposure. I'm sure उसका बहुत सारे benefits जो है ecosystem को impart हो रहा होगा. तो getting down into the nitty-gritties of ScaleX, right? What is the thought process
एक्चुअली व्हाट आर द ethos behind ScaleX. वो ठीक है, आपके फ्रेंड्स ने from the valley, they pushed you into doing this, go private with this, because पाकिस्तान में जो accelerators अब तक सामने आए हैं, right, in comparison to accelerators in the region, right, or beyond that internationally. I had a word with this in private with Roberto Croce as well, the MD for Microsoft. हम ये समझते हैं कि इकोसिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश हो चुका है और डेवलप हो चुका है, लेकिन ऐसा है नहीं, राइट? तो ScaleX के पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, और what impact does it intend to make within the ecosystem? Right. So, I was मैं 2014 में नस्ट इंक्यूबेटर को मैंने हेड किया। उस वक्त मैं आई वेंट टू द टेलकोज एंड मतलब मैंने उन्हें विजन दिया है कि आपको विजन होना चाहिए कि टॉप 10 एप्स इन पाकिस्तान में आपकी 3-4 आपकी होनी चाहिए। And they were very chilled about it, and they had this thing कि भाई they are all powerful because they had access to subscribers। और फिर अगले साल हमने कहा कि we have now Facebook and हमें access to people, subscriber वैसे ही मिल जाएगा। So I found out कि हमारा जो ecosystem है, unfortunately हमारे एक society, हम जो है basically celebratory या एक बैंग जो है ना, उसको हम बहुत ज्यादा वो एंजॉय करते हैं। मुझे मेरे एक बॉस थे, वो कहते थे कि बख्श उनको, वो कहते थे कि जो है ना पाकिस्तान में बस फीता काटना और सेरेमनी करना जो है ना, उसके बाद क्या होता है कैसे होता है, पीपल फॉरगेट अबाउट इट। तो इसी तरह से जो जो प्रोसेस ओरिएंटेड एक इंटेंस रिगरस मतलब एंगेजमेंट होती है, वो हमारे यहाँ मतलब जरा कम है इस वक्त। मेरे ख्याल से एक एवोल्यूशनरी फेज है, बट हम उस वजह से जो है ना हर वक्त एवोल्यूशन में ही होते हैं। तो पाकिस्तान में 2011-12 में जो है ना प्लान 9 और ये सारे मतलब इंक्यूबेटर्स आए थे, और हम अभी तक इवॉल्व कर रहे हैं। ऐसे या 10 साल में तो एग्जिट हो जाता है। तो ये जो है ना अभी भी एवोल्यूशन, तो अब देखें सारे प्रोग्राम्स अभी भी ग्रांट्स पे रन हो रहे हैं। जो फंड रेजिंग नहीं हो रही तो उस पर भी वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप मजीद ग्रांट्स दें। ScaleX is the first accelerator whereby our investor and we make money only when our startups make money. Okay. We don't get वजीफे from the system या गवर्नमेंट जो कि बहुत मतलब एक बड़ा एक वो इन्वेस्टमेंट का वो कर रहे हैं। तो we saw this के जो स्टार्टअप को में जो फाउंडर डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, that is sort of not really addressed by the incubators। मेरी अपनी यूनिवर्सिटी में मेरा मैक्सिमम टाइम जो है ना फाउंडर्स के साथ गुजरता था, और उनके साथ वेरियस सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के ऊपर इंटरेक्शन कर रहे थे। और हम इंक्यूबेटर की मैं कोई आइडेंटिटी नहीं समझता था, बिकॉज मैं कहता था कि फाउंडर्स आर सक्सेसफुल देन द इंक्यूबेटर इज सक्सेसफुल। इंक्यूबेटर विदाउट दैट कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? तो वो एक मतलब एक वैसी जो है ना ग्लैम डॉल बनाना और पोस्टिंग करना और बताना, ठीक है ना, तो विदाउट एनी रियल नंबर्स और इम्पैक्ट। तो बाकी जो बहुत सारे मॉडल्स रहे हैं, उनका एक अपना बड़ा रोल रहा है से हमारे प्लान 9 का, फिर ये नेस्ट IO का, फिर ऑरिक्स जो भी मतलब थे, लम्स का मतलब सेंटर आया, हमारे टेक का भी मतलब अपना ये एक रोल था। बट एज आई सेड ना कि उसमें जो परसेंटेज या सक्सेस स्टोरीज की मतलब ना ट्रैकिंग होती थी, ना इतना उसके ऊपर बात होती थी। और मेरे ख्याल से रूट कॉज जब हम फाउंडर्स के साथ मैं भी एंगेज होता था, तो आई अंडरस्टूड दैट मेनी ऑफ देम आर इंजीनियर्स, और वो जो है ना मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एक्सीलेंस भी और फिर मैनेजमेंट साइंसेस की एक्सीलेंस भी जो है वो लैकिंग है। और मैं वही इन्फ्यूज करता था। इवन जब हम वैली बीन को लेकर गए थे, तो सारा का सारा वो मेरा उनके साथ रहने का मकसद ये होता था कि उनकी जो पोजिशनिंग है वो जो है एक सोफिस्टिकेटेड मैनर में मतलब कैसे की जाए, जिसको वैली वाले अप्रिशिएट करते हैं कि फाउंडर कैन कम अप विद दिस थिंग दैट रिफ्लेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ अ फाउंडर। तो ScaleX के पीछे वही थॉट है जो कि हमारा ग्लोबल एक्सटेंशन प्रोग्राम के मतलब बिहाइंड था, कि पाकिस्तान में देयर इज ग्रेट टैलेंट, बट दैट इज इन अ वेरी क्रूड फॉर्म।
and unsophisticated form. और करंटली जो इकोसिस्टम में जो बाकी इंक्यूबेटर्स हैं वो इसको इंकरेजमेंट की जो है ना एक फिजा है जिसमें इट इज़ ऑल गो गो कल्चर। लेकिन आपने जिस तरह से जिक्र किया कि इंसान सीखता सख्तियों से है, हार्डशिप्स जो है ना वो आपको लेसन वो करते हैं, सिर्फ इंकरेजमेंट से और इवेंट्स से जो है ना वो जो फाउंडर कैपेबिलिटी अगर मैं कहूँ वो नहीं होती। So first of all, ScaleX is very founder, focused, and we try to enable the founder with startup best practices, as well as infuse them with the founder mindset that is required. और second फिर associated यही है कि we believe that पाकिस्तान से global ideas आ सकते हैं, so we work on global ideas which should have a beachhead market in Pakistan. 2% of Pakistani population and businesses, the top 2%, they have consumption patterns very similar to even developed world. So we would say कि almost काफी सारी चीजों की मार्केट जो है पाकिस्तान में भी उतनी है जो कि डेवलप्ड वर्ल्ड की है. So we work with those markets, on those markets, develop traction, and then based on those traction we then go global to develop markets or even other markets in the region, GCC, Europe, and then North America. So इस वक्त हमारा मतलब इस एरिया में ज़्यादा फोकस है, हमारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं. But the idea is that Pakistani founders to operate on a global layer. हमारा जो जनरल थीसिस है वो 2 points के ऊपर बेस्ड है. First of all, we believe that startups have to be global from day one, because the convergence is increasing, and a lot of if you're not global, other global players are going to come in. So you have to have that kind of mindset. And second is we believe that every industry is in a transformation phase, and every business is going to be an e-business by the end of the decade. So उस लिहाज से हम ज़्यादातर जो है वर्टिकल फोकस्ड काम ज़्यादा करते हैं और डीप किसी एक वर्टिकल में जाते हैं जिस स्टार्टअप के साथ भी काम करते हैं. So जो फोकस एरिया है, as I said, it is deep verticals, and with global sort of mindset and opportunities. और इसमें we believe कि पाकिस्तान में बिल्कुल ये possibility है, but टैलेंट की जो ग्रूमिंग है और उनको एक्सपोजर एंड एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज जो है दैट sort of plays an important role. So this is what we do. You can say that the capital that we have, we change that into intellectual capital and provide it to the founders. ये नॉलेज इकोनॉमी की बात होती है, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पे एक बात और करना चाहूँगा. हमारा जो इकोसिस्टम वो एक फेज से गुजर रहा है. देयर वाज अ फेज जब इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स से बड़े गिले मतलब होते थे, राइटली रॉन्गली, तो मैं भी नहीं कहूँगा कि फाउंडर्स करते थे कि हमें ये मतलब कि हमें सक्सेसफुल क्यों नहीं कर रहे होते हैं वो, एज इफ फाउंडर को मतलब दे ओ दैट टू द फाउंडर. उसके बाद फिर तक फंडिंग नहीं मिलती है, तो अब फंड्स भी आना शुरू हो गए हैं. आई थिंक अभी जो फेज है ना वो ये है कि फाइनेंशियल कैपिटल इज एवरीथिंग. I believe human capital is everything. The whole startup game is about the strategy, skill sets, and the execution capacity that founders have. So we are in a very interesting phase जिसमें capital काफी अब available है. अब काफी सारे founders कहते हैं कि capital हमें क्यों नहीं मिल रहा, और मेरे ख्याल से there is introspection which is required strategy और skill sets के ऊपर. और इसकी वजह यही है कि इतना गो encouragement वाला culture के उसे glamorous वो बना दिया है. I say that startup is not a business. It is basically a tool to transform the way things are being done in an industry. Absolutely. To a more efficient level. If you have that mission oriented mindset, but if you're here to make money, I think you can make much more money in a much predictable and more comfortable way if you are in a corporate environment or आप international move करते हैं. If you're doing a business, you can do a much easier business and sort of be independent.
But for doing a startup, I think that transformation mindset is very important. And उसी से फिर जो है ना आपकी लीडरशिप कैपेबिलिटी आती है, और वो जो लीडरशिप माइंडसेट होता है, वो एक बहुत सेंटर पीस है. So these are just sort of my thoughts. I rambled. नहीं, आई एम एक्चुअली enjoying it very much, क्योंकि इतना डायरेक्ट और इतना ओपन जो है, वो बहुत कम लोग जो हैं उसके इतना ओपनली जो है वो बात करते हैं. और दिस इज़ एक्चुअली रियली रियली गुड कि ऐसा आप कर रहे हैं. आई मीन, पर्सनली स्पीकिंग माई सेल्फ, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट फॉर एनी बिजनेस, देखें, स्टार्टअप के लिए तो कोई रेडी वाला भी जो है वो रेडी लगाता है तो वो भी उसका बिजनेस होता है, राइट. कोई आज हम आज स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि बिजनेसेस स्टार्ट हो रहे हैं. हमारे दादा के ज़माने में भी बिजनेस स्टार्ट हो रहे थे, उनके दादा और उनके दादा और उनके दादा, हमेशा से बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं. तो स्टार्टअप्स हैव बीन स्टार्टिंग ever since. Only thing is that carrying on from your point, we are living in a tech era, right? Everything is tech based. और जो आपने पॉइंट रेज किया था कि टेक्नोलॉजी इंजीनियर, बेसिकली फंडिंग तो हर एक को चाहिए, राइट. पैसे तो हर एक को चाहिए, हर चीज़ को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए. मैं भी अगर किसी को एडवाइस करूँ तो ये कहता हूँ कि भाई आप, यू डोंट aim for raising capital. If you have the right chemistry, if you have the right nexus between engineering and management sciences, अगर आप holistically देखें, अगर इन चीज़ों, दोनों चीज़ों का nexus अगर combination अच्छे से बन जाता है, right, तो हो सकता है आप बूटस्ट्रैप करके ग्रो कर जाएं, हो सकता है आपके पास फंडिंग की ऑफ़र आ जाए, कहीं से कुछ हो जाए, क्योंकि आपका बिजनेस इज़ व्हाट मैटर्स, हाउ इट चेंजेस लाइव्स इज़ व्हाट मैटर्स, राइट. सो आई एब्सोल्युटली अग्री विद यू. अच्छा, दूसरी एक चीज़ ये कि आप जो इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अगर मैं उसमें कोई इनपुट दे सकता हूँ इन एनी कैपेसिटी, प्लीज़ डू गिव मी अ शाउट आउट. अगर मेरे अल्फाज से किसी की लाइफ पे कोई फ़र्क पड़ता है, दैट विल बी द माई बिगेस्ट अचीवमेंट. तो अच्छा अदनान, बड़े सारे स्टार्टअप्स को आप यूएस भी घुमा के आ चुके हैं, ठीक है, सिलिकॉन वैली भी ले के चले गए, ड्रेपर भी होकर के आ गए, बड़ी तस्वीरें देखी मैंने, राइट. वो ठीक है, थोड़ी सी देखी थी, वो हाइप में जो है नहीं घुमाई, जैसे लोग आजकल अपनी तस्वीरों को लिंक्डइन वगैरह पे जो है सबकी भरी हुई होती हैं. तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, मतलब जिनको लेके गए उनसे कैसा फीडबैक मिला आपको उन थ्रू दैट प्रोग्राम ऑफ योर्स? हाउ डिड it that aspect actually impact the startups themselves, which were associated with you guys? This is a very interesting point, and I wish कि जितना ज़्यादा मतलब लोगों को इसका पता लग सके. तो मेरी तो लाइक बड़ी लाइट ऑब्जर्वेशन थी, बट फाउंडर्स ने जब खुद ये कहा तो अब मैं उसके ऊपर इंक्रीजिंगली कन्विंस्ड हूँ दैट हमारे कि पाकिस्तान में स्टार्टअप फाउंडर्स रियली अंडर एस्टिमेट the level of excellence and sophistication that is required, to make a startup successful and fundable and all that stuff. और मेरे ख्याल से it takes sort of someone to experience that ecosystem and move in that ecosystem to understand कि किस प्लेन के ऊपर अब गेम ऑपरेट हो रही है. देखें, पाकिस्तान में तो हम बात करते हैं ना कि फंडिंग की बात करते हैं, तो फंडिंग के बाद भी काफ़ी ऐसे वो होते हैं कि आपसे प्रोडक्ट उस तरह की नहीं बन पाती है, दैट्स लाइक हायर लेवल.
फिर उसके बाद प्रोडक्ट बन जाती है तो आपसे उसकी ट्रैक्शन नहीं कर पाती, प्रोडक्ट मार्केट फिट की एस्पेक्ट्स नहीं हो पाती। फिर उससे ऊपर जब आप जाते हैं तो स्केल के लिहाज से जो है ना मॉडल्स के चैलेंजेस होते हैं, एंड फाइनली वो दे ऑपरेट एट अ कल्चर लेवल नाउ, जिसमें जो है ना जो ह्यूमन मतलब वैल्यूज एंड स्किल सेट्स की जो एक्सेलेंस है उसको मैक्सिमाइज करने का टूल है लाइक कल्चर of the organization. It's not the free snacks or Google, but it's a way of working जिसमें इंटेग्रिटी का, रिलायबिलिटी का, लॉयल्टी का मतलब कि एक मतलब एक मॉडल उसकी बेस पे काम किया जाता है, और फिर उसके ऑन टॉप ऑफ दैट लीडरशिप रोल आता है। तो हमारे यहाँ जो 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 लाइक मैकेनिकल जो कुछ मैं कहूँगा कि टर्म्स या कॉन्सेप्ट्स की बात, मतलब वेरियस मैट्रिसेस का नॉलेज जो है ना वही मतलब बस द एंड ऑल होता है। बट ये गो टू मार्केट होता कैसे है, प्रोडक्ट की मतलब एस्पेक्ट्स कैसी देखी जाती हैं, टीम का कैसे किया जाता है। तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि जिन्होंने मतलब वहां से मैक्सिमम फायदा उठाया कि उनका माइंडसेट शिफ्ट जो है ना मेरे ख्याल से दैट वाज द मोस्ट विजिबल थिंग। एंड this is a leadership play. This is not a business play ना, as I said previously. तो उनको जो है ना जब वो वहाँ पे जो जो बेस्ट लेवल नॉलेज हमारे यहाँ थ्योरेटिकल समझा जाता है, जब वो वहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस के तौर पे देखते हैं, एंड एवरी सेकंड पर्सन हैज दोज थिंग्स आर स्टैंडर्ड, तो फिर जो है ना इट मेक्स देम चेंज ना कि भाई मैं कौन से वाले बबल में रह रहा था। तो वो जो बबल का मतलब जरा बर्स्ट होना, और फिर एक एक रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स के साथ अपनी पूरी गेम को ऊपर करने के फोकस इस पे है कि ये ऐसे नहीं है कि भाई कुछ चांस लग गया, बल्कि यू हैव टू बिल्ड योर गेम। मैं एनालॉजी देता हूँ कि लाइक आप अगर स्ट्रीट क्रिकेट खेलते हैं और आप ओवल में जो से मैचेस हो रहे हैं, वर्ल्ड कप फाइनल्स हो रहे हैं, तो स्ट्रीट क्रिकेट में जिस तरह से आप मतलब बॉल को या बहुत सारी चीजों को मतलब रूल्स को इग्नोर करते होंगे, फिटनेस को नहीं करते होंगे, तो वो वहां तो नहीं किया जा सकता ना। तो आई वुड से कि जब आप ग्लोबल लेवल की और यूनिकॉर्न के आपके विजन और एम्बिशंस हैं, और स्टैंडर्ड्स आपके जो है ना वो नुक्कड़ वाली दुकान वाले हैं, वर्क एथिक्स के, या फॉर दैट मैटर इवन सोफिस्टिकेशन के मैं कहूँगा, तो ये अक्सर कहा जाता है कि बाहर के पढ़े हुए लोगों को क्यों फंड किया जा रहा है। मेरा ख्याल है उसकी वजह ये कि दे आर अवेयर sort of with the standards that one needs to maintain। तो पाकिस्तान में रहते हुए जब आप उन स्टैंडर्ड्स को लेकर चलते थे, बहुत बड़ा एक डिफरेंशिएटर मतलब बन जाता है, बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाता है। So I would say कि this aspect, and they are very clear कि they don't have to keep money sort of front and center, but they have to rather have a mission, and that mission needs to be transformation focused, and वो उस पर्पस को जो है ना अचीव करने के ऊपर काम करेंगे, और उसके अराउंड कल्चर और सारा सिस्टम बिल्ड करेंगे, तो ही ये मतलब गेम चल सकती है। अदरवाइज जो है आपको इतने फाइनेंशियल सेटबैक्स और इतने चैलेंजेस होंगे कि यू मे गिव अप, क्योंकि लोकल फाउंडर्स जो हैं वो इसको एज अ बिजनेस देख रहे होते हैं, उनकी इक्विटी के साथ एक अपनी ऑब्सेशन होती है, रादर देन उस पाए को ग्रो करना और उसमें उस लेवल ऑफ एक्सीलेंस के लोगों को लाना, और अपने आप को लकी समझना जब उस किस्म के लेवल ऑफ एक्सीलेंस का साथ एसोसिएटेड हो, जो आपको ग्रो कर सके, दे सके। तो मेरे ख्याल से ये माइंडसेट शिफ्ट वाज द मोस्ट विजिबल चेंज। तो अदनान, एक इंटरेस्टिंग बात की आपने, पाकिस्तान के एक बबल में रह रहे होते हैं लोग, राइट, बाहर जाकर के जो है वो बहुत सारों को एक्सपोजर मिलता है, दैट एक्सपोजर इज़ वेरी मच नेसेसरी। आपके ख्याल में पाकिस्तान में भी एक बबल में रह रहा है इकोसिस्टम, राइट, तो वो बबल जो है वो कब बर्स्ट होगा? What's your perception of the इस सेंस में बबल में है पाकिस्तान में इकोसिस्टम? overall ecosystem? Because a lot of people still don't have access to the right information, don't have access to the right mentors, they don't have direction. You also in this comment of yours, you also mentioned that
देयर इज अ एक परसेप्शन है, मतलब जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ जो बाहर से पढ़ के आए हैं उन्हीं को फंडिंग मिलेगी, जो स्टार्टअप मैं समझ गया एक्सपीरियंस आपकी बात। स्टार्टअप जी एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, सिर्फ उन्हीं को फंडिंग मिलेगी, जो एक्स करीमर्स जी हैं या एक्स उबेरियंस हैं तो वो उन लोगों को फंडिंग मिलेगी। I personally I disagree with this notion because those guys are bringing experience with them, right? yeah, They've been through the drill, they know the game, so obviously they have an edge over everybody. But at the same time, those who do not have exposure to such an environment or exposure to access to anything related to the ecosystem, I think that sort of bubble is there, and that is yes. one segment that really needs to scale and step out of that bubble. So when do you think, being involved with the ecosystem from the ground up, when do you think that bubble is going to burst? This is very important point। देखिए पहले पाकिस्तान में थ्रू आउट एक सिस्टम रहा है इकोसिस्टम बिल्डिंग। देयर वर लॉट ऑफ पीपल, कुछ फाउंडर्स होते हैं वो अपना वो इकोसिस्टम बिल्डर लिखते हैं तो मैं कहता हूँ यार हमारी हिम्मत नहीं होती लिखने की वो इकोसिस्टम बिल्डर्स। दिस इज बिकम मोर ऑफ अ लाइक इट इज बिकम लाइक एन इवेंट मैनेजमेंट काइंड ऑफ सेटअप, जिसमें जो है ना मतलब सारे जो है ना वो देख रहे थे कि किसकी कितनी सोशल मीडिया पे प्रेजेंस आई और फिर किसको किस तरह से लाइक एक विजिबिलिटी मिलती है। और इसके पीछे बहुत बड़ा मुहर्रक जो है ना, देखिए देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक वो ग्रांट बेस्ड मतलब कल्चर का है। इफ आई एम देखिए मैं जब नस्ट में था ना तो से आई वाज गेटिंग अ सैलरी, बट आई यूज्ड टू लाफ एट इट। मैं कहा ये बिजनेस मॉडल सही नहीं है कि इफ आई कैन मेक मिलियनियर्स आउट ऑफ अदर्स, ठीक है ना, तो इधर तो आई एम लाइंग, मैं मसाज कर रहा हूँ इस बात को। अदरवाइज जो है ना मतलब मैं एक दो को करने के बाद खुद मिलियनेयर बनने के पाथ पे जाऊंगा। मैं एक सैलरी के लिए क्यों ये काम कर रहा हूँ। तो यू हैव टू हैव लाइक इक्विटी मॉडल एंड जो जिस तरह वाईसी का मॉडल है, एक्सीलरेटर्स का मॉडल है, तो वो उनका। तो अभी भी देखें पाकिस्तान में जो इनक्यूबेटर्स हैं दे हैव लाइक ग्रांट फंडिंग, यूनिवर्सिटी को भी ग्रांट फंडिंग मिलती है, एनआईसीज को भी ग्रांट फंडिंग मिलती है। और रफली जहां तक मैंने कुछ कैलकुलेशन की थी ना, $35,000 पर स्टार्टअप जो है ना वो एनआईसी को मिलते हैं। अब $35,000 के ऊपर अगर आपको एक स्मैशिंग किस्म की कोवर्किंग स्पेस मिल रही हो तो मेरे ख्याल से बहुत एक्सपेंसिव है। आई थिंक द ह्यूमन एलिमेंट तो हमारे जो आई थिंक अगर तो एक तो ये है, और इसमें मेरे ख्याल से ह्यूमन एलिमेंट की जो है ना कमी को कोई आइडेंटिफाई नहीं करता, खुल के बोला नहीं जाता। नॉलेज कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ये गेम तो ये मेनली इस चीज की है। दूसरे एंड पे हमारे पास प्राइवेट कैपिटल ऑफ वीसीस का आ गया है। अब देखें वीसीस तो अपने आप को इकोसिस्टम बिल्डर नहीं कहते हैं ना, उन्होंने तो देखें जो भी फिश है इन द ओशन, ठीक है ना, उसको मतलब कैच करना है, इन्वेस्ट। तो जो भी गुड फाउंडर्स हैं इस सिस्टम ने जो कुछ भी मतलब कुछ प्रोड्यूस किया है, उन्होंने उस टैलेंट में इन्वेस्ट करना है और उससे मतलब एक एंटरप्राइज बनाना है। उनका तो कभी भी ये क्लेम नहीं रहा ना कि हम इकोसिस्टम बिल्डर्स हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और देखें दे विल हैव टू पे द प्राइस फॉर इट ऑफ इट आल्सो, क्योंकि दे आर आंसरेबल टू देयर इन्वेस्टर्स। तो आई थिंक वहां तो एक बहुत लॉजिकल किस्म का मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ पर जो है ना जो हमारा ग्रांट ओरिएंटेड मैकेनिज्म है, ये इसमें जो है ना मेरे ख्याल से स्पेक्ट्रम की जरा दूसरी एक्सट्रीम पे ज्यादा चला गया है। और वो अगेन यही वजह है कि अब वो माइंड भी करते हैं जब इस बात को ज्यादा हाईलाइट किया जाए, बिकॉज देखिए मैं उनका एक रोल तो है, मैं तो ये कहूंगा कि बट ये उस रोल की एक्सपेक्ट तो देयर इज अ मिसिंग एरिया। और मैं अगर आप बताता हूँ वो स्केलेक्स हम फिल करने की कोशिश कर रहे हैं बहरहाल, लेकिन वेरी माइक्रो नैनो लेवल। देखिए स्टूडेंट्स को जो है ना मेट्रिकुलेशन तक या ओ लेवल्स तक की एजुकेशन चाहिए होती है ना। ये तो नहीं हो सकता कि वो ना हो तो फिर वो मतलब और डायरेक्ट लोग यूनिवर्सिटीज में चले गए। प्रॉब्लम ये है कि जब आप मेट्रिकुलेट्स या हाई स्कूल लेवल की आपकी एजुकेशन और आप कह रहे हो कि हम तो पोस्ट डॉक पीएचडीज पैदा कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, तो उसके लिए फिर आपको ये हाइप होती है और ये रियलिटी होती है।
तो अगर आप यही कहें जो आपका रोल है, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव रोल, ठीक है ना, कि भाई देयर हैज टू बी अ प्लेस वेयर पीपल कैन कम टुगेदर, अवेयरनेस हो, तो उस लिहाज से बहुत जबरदस्त मतलब ये रोल। बट ये जो लेवल है ना जहाँ पे आप प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल करियर करते हैं, जहाँ में डोमेन में डीप जाया जाता है और रियल गेम कैसे प्ले की जाती है, वो पोस्ट डॉक पीएचडीज। तो इस वक्त जो गैप है ना वो ये कि इन्वेस्टर जो है वो पोस्ट डॉक पीएचडीज जो भी थोड़े बहुत हैं वो ले रहे हैं, यहाँ नहीं मिल रहे हैं तो बाहर से ला रहे हैं और ले रहे हैं उनको, ठीक है ना। और सिस्टम जो है वो मेट्रिकुलेट्स मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन वो हाइप कर रहा है उसको कि पोस्ट पीएचडीज है, तो रियल मनी तो नहीं जा रही है उसमें। एंड दिस काइंड ऑफ मतलब फाउंडर बिल्डिंग जो है इसका सबसे बड़ा कि एहसास ज़िया का फाउंडर्स को भी नहीं पता। जो मैंने कहा, जो अगर हम बबल कहें ना, तो मेरे ख्याल से ये एक नॉलेज सॉर्ट लैक ऑफ नॉलेज जो है, या लैक ऑफ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस होल, और वो वाली ग्रूमिंग और वो वाली मतलब जो मैकेनिज्म्स हैं जो कि ट्रेडिशनली एक्सेलरेटर्स देते हैं, उसमें उनको इक्विटी का मसला होता है। वो स्टार्ट ही करते हैं कि आप हमें पैसे मतलब दें, हालांकि एक्सेलरेटर्स के पैसे जो है ना वो सिर्फ से सैन फ्रांसिस्को में या कहीं पर रहने के लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, ताकि वो 6 महीने आप उनके साथ गुजार सकें। उसका मकसद ये नहीं होता कि $70,000 वो आपको फंडिंग दे रहे होते हैं या इस तरह की कोई बात। सो मेरे ख्याल से जब हमारा इकोसिस्टम नॉलेज को की वैल्यू को और इंटेलेक्ट की और ह्यूमन कैपिटल और स्ट्रेटेजी की वैल्यू को मतलब नहीं एक प्रीमियम देना शुरू करेगा, तो उस वक्त तक जो है ना मेरे ख्याल से हम लाइक इसी तरह एक मिक्स मैच मैनर में चलते रहेंगे, जिसमें वीसीज अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे होंगे। एक जो है ना आप समझिए कि एक थिन मतलब ऊपर की लेयर होगी, लेकिन जो एक सॉलिड फाउंडेशन मतलब बन सकती है ना हमारी, उसको बिल्ड करने के लिए मतलब उस किस्म का ग्रूमिंग और उस किस्म की थिंकिंग और उस किस्म का एक्सपोजर सारा का सारा होना चाहिए। हम तो बड़े लिमिटेड स्केल पे करते हैं, वी वर्क ओनली विद 4 to 6 स्टार्टअप्स इन अ ईयर, और उसका पर्पज ही ये होता है कि बिकॉज देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच दे हैव टू अनलर्न, एंड देन सो मेनी थिंग्स व्हिच they have to sort of absorb. There are so multiple dimensions होते हैं स्टार्टअप में। तो इस पे मैं इसकी एक मिसाल से खत्म करना चाहता हूँ कि देखें, कन्वेंशनल बिजनेस में कहाँ ये होता है कि आपको कोई $1,000,000 देता है और आपसे कहता है कि 10% मेरा और 90% तेरा। ये तो नहीं होता ना। अगर कोई फैक्ट्री है, कोई सेठ आपके साथ काम कर रहे, पाकिस्तान में नहीं दुनिया में कहीं पर भी ये नहीं होता था। ये स्टार्टअप और टेक इकोनॉमी में क्यों हो रहा है? क्यों? बिकॉज सपोजेडली 90% जो है ना वो फाउंडर का इंटेलेक्चुअल कैपिटल होता है, उसकी कैपेबिलिटी होती है, उसकी स्किल्स होती हैं, ठीक है ना, कि वो इस पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करेगा कि ये कल 5x हो जाएगा, अगले राउंड के बाद जो है ना फिर मजीद जो है ना मतलब ये 20x हो जाएगा और इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब है ह्यूमन स्किल को सारा वेट दिया जा रहा है ना इसमें। अब जब ह्यूमन स्किल को वेट दिया जा रहा है, तो जो ह्यूमन स्किल देने वाले हैं उनको तो आपको सर पे बिठा के रखना होगा। बिल्कुल। तो हम तो ज्यादा इसके ऊपर बोलते नहीं है, बिकॉज इट साउंड्स लाइक मतलब वो ब्लोइंग वन ऑन ट्रम्पेट वाली बात है। अच्छा, वीसीज में भी ये स्किल है, बट वो बस पैसे दे देते हैं और दे वर एबल टू रेज मनी बिकॉज दे कैन टॉक द स्टॉक, ठीक है ना। But they don't necessarily need to walk this talk. I'm sure कि many of them would be doing that also, मतलब जो अपने फाउंडर्स के साथ करते होंगे। बट ये मिसिंग चीज जो है ना हमारे फाउंडर्स को, इस चीज इसीलिए तो देखें जब एयरलिफ्ट से या करीब से जो लोग जा रहे हैं वो सेमी ट्रेंड हैं, उन्होंने वो एक्सपोजर जो है ना सिलिकॉन वैली में नहीं मिला तो उन्हें यहाँ कुछ मिल गया, और उन्होंने एक सेंस सीखा कैसे चलता है और किस तरह से चलता है। ये शायद खुद ब खुद हल हो जाए 3-4 साल में। तो एसेंशियली रियल इंक्यूबेटर एक्सीलरेटर्स का काम स्टार्टअप्स कर रहे हैं सब पाकिस्तान में। सर बिल्कुल, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू 1000%। जो इकोसिस्टम है ना वो एज अ होल इट हैज़ टू स्टार्ट थिंकिंग, इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड द वजीफ़ा सिस्टम। जो आप वाली बात है, जो इंक्यूबेटर वाली जो बात उसका एक अपना रोल भी है जी, उसका एक रोल है, लेकिन मैंने कहा ना कि वो उसको आप हाइप कर देते हैं। अगर वो अपना असल रोल बताना शुरू करें तो उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। तो वो नहीं सर, बहुत सारे लोगों की नौकरियां लगे रहने थे। तो
तो खैर वो बबल जो है वो इवेंचुअली बर्स्ट होना है, राइट. द गुड थिंग इज दैट the ecosystem, startups are all about creating opportunities, right. Small businesses जितने ज़्यादा होंगे उसकी उतनी ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी लोगों के पास, और काम करने का मिलेगा, डाइवर्सिफिकेशन होगी, इकोनॉमी मूव फॉरवर्ड करेगी. एंड स्मॉल जो कहते हैं ना, कतरा कतरा जो है वो दरिया बनता है और फिर समंदर बनता है, और वो वाली चीज़. तो स्टार्टअप जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो थॉट प्रोसेस है बेसिकली यही है कि जो है लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो. तो इट्स अ रियली गुड थिंग दैट यू हैव पॉइंटेड आउट. इन फैक्ट यू आर द फर्स्ट पर्सन हु आई एम स्पीकिंग टू ऑन स्टार्टअप टॉक्स जिसने ये चीज़ें पॉइंट आउट की हैं. The ecosystem needs to provide value, right? Like say for example, मतलब irrelevant बात हो जाएगी, off topic हो जाएगी, लेकिन जो startup talks जब शुरू किया था, it's all about creating that value. क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास जैसे access to information नहीं है, knowledge नहीं है, जैसे आपने कहा लोगों को पता नहीं है, लोग जो हैं वो ना समझी में बहुत सारी चीज़ें जो है वो कर जाते हैं. अब ये जो हम टॉक कर रहे हैं ये कोई कॉमेडी शो तो है नहीं, दिस इज़ अ सीरियस कॉन्वर्सेशन. तो इसको तो कोई एक्सपोजर एज सच मैं चाहूँ कि भाई मुझे इसको 1 लाख लोग देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा, राइट. लेकिन हाँ, जो कॉन्वर्सेशंस की जो छोटी छोटी जो स्निपेट्स होती हैं, राइट, all these points I can also talk about them, right. But for people who are driving the ecosystem, players who are driving the ecosystem, if they are doing it, they will carry more value, have more impact on people. So the idea behind startup talks is the same thing, right. To have impact, to have to provide value to whoever is associated with the ecosystem. तो सर Right. टाइम वैसे काफ़ी हो गया है, इसको जल्दी से हम कंक्लूड करते हैं. लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस हियर. where do you see it heading? Where do you see the whole economy, startup economy in Pakistan heading? I think it is just started. और मेरे ख्याल से जो हम लाइक इकोसिस्टम की कुछ चैलेंजेस, वीकनेसेस या एवोल्यूशनरी इम्प्रूवमेंट, मेरे ख्याल से ये विद टाइम वॉश अवे हो जाएंगे. सो आई वुडंट कॉल इट के बबल कोई बर्स्ट होगा. मेरे ख्याल से जो 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 ये स्टार्टअप्स जो हमारे पास बड़े आ रहे हैं वो एक ग्रूमिंग सॉर्ट ऑफ एरियाज बनते जा रहे हैं, और ये सिलसिला और चलता जाएगा. और ये जो अभी आप समझे कि ज़रा शायद बबलिश लग रहा हो, ये सॉलिड हो जाएगा ओवर द नेक्स्ट 2-3 years. और हम कह सकते हैं कि जो हमारे इंक्यूबेटर्स या बाकी वो अपना मतलब एक रोल तो प्ले कर चुके होंगे उस वक्त तक, इसको सस्टेन करने का, इस थॉट को अलाइव रखने का. सो मैं तो समझता हूँ जी कि इट्स गोइंग टू बिकम स्ट्रॉन्गर एंड बेटर. इट इज़ जस्ट दैट कि जो फाउंडर्स जितना टाइम इस पे इतना वेस्ट करेंगे अपनी लर्निंग को इन्हांस न करने के ऊपर और नॉलेज एरिया सीख न करने के ऊपर, वो इतनी देर ही से इस वेव को ज्वाइन करेंगे, तो अपना ही लाइक नुकसान कर रहे हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स मैं कहता हूँ कि स्टार्टअप जो है इज अबाउट अगर आप सिर्फ अपनी गलत डिसीजन जो है ना वो कम कर दें या जीरो पे ले आए ना, तो यू आर अ यूनिकॉर्न. Of course. It's like अवॉइडिंग those mistakes जो कि आपके 6 महीने और साल और 2 साल मतलब आपके जो जाया कर देते हैं, कि जिसके बाद आप कैश फ्लो आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं. सो जो इस नॉलेज एलिमेंट को जो कि सेंट्रल पीस है, देखिए फाउंडर्स अपने लिए तो 90% इक्विटी को बड़ा जस्टिफाइड समझते हैं, उनको इसकी रीजन नहीं पता, वो बस ये हो रहा है, यही होता है, ये स्टार्टअप को नहीं समझते, ठीक है ना. इस तरह से वो लोकल मनी को कहते हैं. लेकिन अगर वो लोकल मनी को बताना है ना कि देखिए हम टिम ड्रेपर के आप उसकी फैसिलिटी बजाए ना, तो वहां पे वो सारे उन्होंने जो मार्वल के कैरेक्टर्स होते हैं ना या डीसी के, तो सुपरमैन और वंडर वुमन, वो कहते हैं फाउंडर जो है ना वो बेसिकली लाइक मतलब कहते हैं कि उसका क्लेम होता है कि मैं सुपरमैन, मैं मैन नहीं हूँ, मैं सुपरमैन. And that's why I deserve 90% because मैं इसकी सारी ये डेवलप करूँगा. सर इलॉन मस्क को देखें या
अपना बहुत सारे फाउंडर्स को देखें ना, हम्म, तो दे आर लाइक वॉरियर जनरल्स की तरह जो है ना, वो कैपिटलिज्म के सिस्टम में जो है ना, वो उस तरह से अपने आप को पोजीशन करते हैं, और वो करते भी हैं, वो हम्म, फाइट्स विन भी करते हैं। तो ये स्किल डेवलप होना बहुत जरूरी है, माय ओपिनियन। और ये जो है ना, फाउंडर जितना जल्दी करेंगे उनके फायदे में होगा। इकोसिस्टम मेरे ख्याल से कोई खतरे में नहीं है। हम्म, इकोसिस्टम स्ट्रांग से स्ट्रांग और सॉलिड से सॉलिड तर होता जाएगा। हम्म, और इसमें बड़ा रोल जो है ना, वो ये है कि सीरियस मनी जो कि अकाउंटेबल है फॉर देयर रिटर्न्स, हम्म, वो अब है। और हमेशा से ये सिलसिला ज्यादा कामयाब चलता है बनस्बत ग्रांट्स की। बिल्कुल सर। फाउंडर इसमें तो कोई शक नहीं, वो सुपरमैन तो पता नहीं है, नहीं है, सुपर ह्यूमन ज़रूर होते हैं, राइट। जी जी, हाँ। तो सुपर वुमन। तो अदनान, इन द एंड स्केलेक्स हैज़ बीन हाइडिंग इन द शैडोज, छुप छुप के बहुत सारे काम किए हैं। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर स्केलेक्स? देखिए, वी स्टार्टेड एट द राइट एट द बैंग इन द बिगनिंग ऑफ द कोविड। और हमारे इंटरनेशनल एस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो गया। और उसमें फिर देन वी वर्कड वेरी मच सॉर्ट ऑफ ऑन इंटरनल कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द स्टार्टअप्स एंड वी रियलाइज्ड कि ओके, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आई डोंट नो, होता ये है कि जब आप पाकिस्तान में किसी को एनेबल कर रहे होते हो बनस्बत आप बाहर कर रहे होते हो, तो बाहर सिस्टम भी उनको एजुकेट कर रहा होता है। ठीक है ना, पाकिस्तान में ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो उस लिहाज से मतलब द होल वर्ल्ड वाज आई वुड से क्लोज्ड उसमें था। और डिजिटल या वर्चुअल से आप एक्सपोजर उस तरह से नहीं दे सकते हैं। हमारे कुछ स्टार्टअप्स, आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस ईयर वी वुड sort of expect them to sort of establish their traction to a considerable level, और सीरीज ए के लिए मतलब वो तैयार होंगे, तो उसकी न्यूज आएगी। हमारा ये कहना है कि अगर हम खुद ही न्यूज मतलब बना रहे हो और या उसमें सामने आ रहे हो, देयर ऑलवेज हैज टू बी सॉर्ट ऑफ रियल वर्क बिहाइंड इट। तो मतलब काम कर लेते हैं, फिर काम की बात खबर होनी चाहिए ना। खबर बराए खबर जो है वो हम क्या अभी अभी करें। सो यू कैन से दैट वी आर सॉर्ट ऑफ हम हमने अपने आप को चैलेंज दिया, उसी पे मतलब क्लियरली फोकस्ड है। अगर हम मतलब इसको प्रमोशन वगैरह पे ज्यादा वो जाएंगे, तो हमारे स्टार्टअप्स के ऊपर जो फोकस है वो जरा इस वक्त में डाइल्यूट हो जाए। और हमें बड़े चैलेंजेस होते हैं इससे। Like many startups, they don't know that there was this global acceleration program जो कि हुआ था, और उसमें स्टार्टअप्स गए थे, और वो कहाँ पर हैं, किस तरह से हैं। और जब हम उससे बात करते हैं तो हम जो बातें कर रहे हैं लीडरशिप की, अब देखें आपका एक एक एक्सपीरियंस है, जो भी सीनियर लोग होते हैं उन सब बातों की वैल्यू और सिग्निफिकेंस को समझते हैं, ठीक है ना। लेकिन यंग लोग नहीं समझते हैं, बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान ही देखा होता है। वो उनका ख्याल होता है जो यहाँ का सिस्टम है, यहाँ का तरीकाकार है, वही तरीकाकार हर जगह के ऊपर है। तो हमें उससे चैलेंजेस भी होते हैं, बट आई थिंक काम से ही जो है ना आपके उसका ज्यादा पता लगता है। तो हम भी ये समझते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट तब होगा जब हमारा सीरीज ए हमारे स्टार्टअप का हो जाए, तो हमारे मॉडल की स्टेप की वैलिडेशन भी स्टैब्लिश हो जाएगी। और हम यही बात करेंगे बाद में भी, क्या फाइनेंशियल कैपिटल से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला कैपिटल होता है, स्किल कैपिटल जो दिया जाए। So I think we intend to work the way we are working. We think that people know our work. People who are senior enough, who are active, who are old enough, they know our work pretty well. They're also just so wait and see कर रहे हैं। हालांकि मकसद हम पहले भी प्रूव कर चुके हैं। लेकिन that's a founder story, कि no one will pick you up. You have to sort of rise up yourself. तो हम बस मेहनत कर रहे हैं। And let's see, अल्लाह ताला से बरकत आए। इंशाल्लाह ताला सर, अल्लाह आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। और ये बात आपने बहुत ज़बरदस्त की कि योर वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ, राइट। एंड उस कल्चर से बाहर निकलना चाहिए कि जो है एक न्यूज़ बनाने के लिए या एक अनाउंसमेंट बनाने के लिए जो है उस अनाउंसमेंट की पहले हाइप क्रिएट की जाए और फिर उसको अनाउंस किया जाए, राइट। तो जी वो जी जी जी। इतनी मेहनत जो है वो दूसरी चीज़ें करने में कर लगा दे आदमी, वो ज़्यादा बेहतर है। तो
अदनान, बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं आपने पूरी इस कॉन्वर्सेशन में. What would be that one message that you would like to give to the youth of the country, whoever is involved and whoever is wanting to get on the entrepreneurship ladder? लर्निंग इज इक्वल टू ग्रोथ. एंड जब आप लर्निंग के लिए अपनी मतलब हंगर और थर्स्ट डेवलप करें, आई थिंक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स अवेलेबल ऑन द इंटरनेट आल्सो, ऑन ट्विटर. वहाँ से लर्निंग मतलब करें. और अगर आप मतलब ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर करें कि जो आपका जो नॉलेज और स्किल्स जो है ना, दैट इज व्हाट रियली मैटर्स. कैपिटल जो है ना इज चेजिंग सच फाउंडर्स. Yes. जब आपको कैपिटल चेज नहीं कर रहा ना, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी लर्निंग और अपनी गेम को नहीं इम्प्रूव किया. बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है. आई मीन, मेरी भी अप्रोच ये होती है. आई मीन, दिस कॉन्वर्सेशन विद यू, दिस इज़, आई थिंक वी बीन टॉकिंग फॉर ऑलमोस्ट एन आवर. दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कॉन्वर्सेशन आई हैव हैड विद एनीबडी, सो आई एम रियली रियली एंजॉयिंग इट. अनफॉर्चुनेटली उसको ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि एक और मीटिंग जो है, मतलब वो काम के हवाले से, इसके हवाले से, राइट, वो है. बट लर्निंग इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. आई एम लाइफ लॉन्ग लर्नर. बहुत सारी चीज़ें मैंने आपसे सीखी. बहुत सारे जो है यंग लोगों से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, राइट. क्योंकि जब तक आदमी लर्निंग की अप्रोच नहीं होगी तो तब तक दिमाग जो है वो खुलेगा नहीं. और असल चीज़ वही है, दिमाग खुलना चाहिए ताकि सॉल्यूशंस वो ऑटोमेटिकली फिर जनरेट होती रहें. तो Adnan, thank you very much for being here. I would have loved to give this another hour or 2 hours, right? इंशाल्लाह ताला कभी इन पर्सन मुलाकात होगी तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि कभी खाने पे या कॉफ़ी पे मुलाकात करें, राइट. प्लेजर. और विद रिगार्ड्स टू स्टार्टअप टॉक्स, मेरी तो टारगेट ये है कि मैं जो है ना ये ज़मीन हिला दूँ किसी तरीके से, जो है ना हलचल जो है वो ऐसी मच जाए कि जो है वो कुछ ना कुछ लोगों की हेल्प हो. तो अगर आप उस हवाले से कुछ गाइड कर सकते हैं, आई वुड लव टू हैव योर फीडबैक ऑन दैट. और there are lots of startups that you've been working with. If you feel that they can add value to the whole ecosystem, please do introduce them. I would love to host them over here. ड्रेपर आप बहुत सारे लोगों को लेके जा चुके हैं. टीम ड्रेपर से मेरी दोस्ती करा दें, उसके साथ भी टॉक कर लेते हैं. ठीक है सर. जरूर 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 जरूर. आई लुक फॉरवर्ड टू स्टेइंग इन टच. इट वाज अ प्लेजर. इंशाल्लाह. एंड आई होप कि इसको आप एडिट भी जरूर कीजिएगा, बिकॉज वो जो अटेंशन स्पैन होता है ना, वो लोगों का इतना नहीं होता. नहीं सर, मैं खुद कभी 1 घंटे की वीडियो नहीं देख मैं सकता. उसको डाल तो वो वैसे तो वो हल्की फुल्की एडिटिंग करके वो रिपोजिटरी में डाल दूंगा यूट्यूब पे. लेकिन हाँ, वो जो छोटे जो वैल्यू प्रोवाइडिंग जो स्निपेट्स हैं, राइट, वो दे आई विल टेक देम आउट. एंड वो उसका स्टार्टअप टॉक्स का पेज है, मैं रेगुलरली उसके ऊपर जो है वो फीडर में लगा देता हूँ. वो ऑटोमेटिकली रोल आउट होते रहते हैं ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस. तो थैंक यू वेरी मच अदनान. Great, Ji. It was a pleasure, and I look forward to staying in touch, Ji. अल्लाह ताला. Thank you so much for this. बेस्ट ऑफ लक सर. Take care. बेस्ट ऑफ लक. Khuda Hafiz. अल्लाह Bye. हाफिज़.